बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमजद हुसैन है और मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक वीडियो भेजी डॉक्टर तैमूर रहमान की, जिसका टाइटल था व्हाई आई एम नॉट अ पोस्ट मॉडर्निस्ट। दो हिस्सों में है। टिल देन आई हैड नॉट वॉच द मूवी, द वीडियो, एंड आफ्टर वॉचिंग इट I was if I say I was shocked, that would be an understatement, because I couldn't really understand why a learned professor at LUMS would be doing these mistakes that he would be making in that video and be so proud of them. So I'm making this video for my students as well, and because since they are under your influence, so. And since you are at LUMS, and given the structure of our society, they will always consider you to be correct. What I'm doing is that through this video, I'm trying to unmask all those misreadings, misinterpretations, and flawed definitions of postmodernism, and I'm trying to counter them, and I'm trying to show. To my students the structure of thought that you are coming from, and why are you doing all these things that you are doing, why are you deliberately while playing for the position you are showing yourself to be a Marxist, as to be opposing the very structures that you are trying to be against politically. In your definition of it, you are providing a basis for all those structures. So in order to understand all these things, yes, I'm making this video. So let me give you Dr. Saab's definitions of it, of postmodernism, and then I will explain here his genealogy of postmodernism, and then I would explain that why Dr. Saab is against all these understandings of postmodernism. Why is he deliberately inferring the wrong or the flawed inferences? Why is he doing it? So listen to his definition of postmodernism. डॉक्टर साहब के मुताबिक पोस्टमॉडर्निज्म अजीब व गरीब है, हमारी समझ से बालातर है, मार्क्सिज्म के ख़िलाफ़ है, एपॉलिटिकल है, अकल के ख़िलाफ़ है, अनरीज़न है, मम्बू जम्बू है, सब्जेक्टिविटी के इट्स फॉर सब्जेक्टिविटी एंड अगेंस्ट ऑब्जेक्टिविटी, and it is against this scientific reason where every cause must have an effect. So इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ है। वो एक टेक्स्ट पर यकीन रखती है, वो कहती है कि सारी दुनिया एक टेक्स्ट है। वो पॉलिटिकली बहुत करेक्ट स्टांस रखती है कि तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, तुम मुझे गलत नहीं कह सकते, मैं आपको गलत नहीं कह सकता। एंड और भी बहुत सारी कि ये ज़ुबान को बहुत अहमियत देती है। तो ये उनके definitions हैं कि since it is against all these things, and since we believe in enlightenment, since we believe in its legacy, अगर ये postmodernism इन चीज़ों को hate करती है, तो we say postmodernism is wrong. डॉक्टर साहब की जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन्स हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। सिर्फ मैं डॉक्टर साहब की एक और उसी वीडियो से आप अगर आप सुनते हैं तो आपको पता लगेगा कि डॉक्टर साहब उस पोस्टमॉडर्निज्म को एक ख़ास किस्म के वैक्यूम में देख रहे हैं, और आइसोलेटेड फ्राम सर्टेन अदर इन्फ्लुएंसेस और हैपनिंग ऑल अराउंड इट एंड इट बीइंग पार्ट ऑफ इट। उनको उसको एक वैक्यूम में मुकम्मल वैक्यूम में देख रहे हैं। और जिस थॉट को वो बयान करते हैं कि ये पोस्टमॉडर्निज्म की जीनियोलॉजी है, मसलन हाइडेगर, नीचे, लकान, फ्रॉयड, and then Foucault, and then Derrida, and then Yale School, and then Paul Dimon, and then his being a secret Nazi, and Heidegger being a secret Nazi as well, and connecting all those things. So you are left to do all these things. Okay. ये जीनियोलॉजी तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझनी हो। एक कि वो पोस्टमॉडर्निज्म को एक ख़ास किस्म की एक मखसूस इंटेलेक्चुअल जीनियोलॉजी देते हैं जो हाइडेगर से शुरू होकर पॉल डीमान और येल यूनिवर्सिटी तक आती है।
और ये कि वो इसको एक वैक्यूम में देख रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को, डिवॉइड ऑफ ऑल दोज अदर थिंग्स हैपनिंग अराउंड इट। ये दो चीज़ें आपने नोट करनी है, बिकॉज इन्हीं से हमें पता लगेगा कि जो उन्होंने डिफिनेशन जो इन्फ्लुएंसेस किए हैं पोस्ट मॉडर्निज्म से, वो सब की सब फ्लॉड हैं। बिफोर वी बिगिन, मैं आपको इस उनके एनालिसिस की मैं उस वो करने से पहले मैं आपको डॉक्टर साहब की भी अपनी इंटेलेक्चुअल जीनोलॉजी बता देना चाहता हूँ, ताकि सो यू आर क्लियर अबाउट what is going to follow, the debate that we are going to involve in. For that, you need to know where Dr. Saab is coming from. And Dr. Saab is coming from, according to what we have inferred from his talk about postmodernism, he is coming from analytic philosophy, and he's coming from enlightenment, and he's coming from what we say the legacies of enlightenment and all those things. So he's a rationalist, he's a structuralist, he's a modernist, and he is what we say the wonderful boy of Macaulay. Okay, so you need to understand all these things, because that कि ये rationalist approach is positivist, is scientific approach, and it is what we say what the learned doctor is coming from. These are his intellectual foundations. This is where this is his reference point to understand postmodernism from. And it's very important for you, for students to know where you stand on a certain topic, so that they can have a better understanding of the whole thing. सो आपने देख लिया कि डॉक्टर साहब कहाँ खड़े हैं, वो रीज़न के साइड पर खड़े हैं, वो एनालिटिक फिलासफी के साइड पर खड़े हैं, वो स्ट्रक्चरलिज्म के साइड पर खड़े हैं, वो मॉडर्निटी के साइड पर खड़े हैं, वो एनलाइटमेंट के साइड पर खड़े हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी और जो बाइनरी डिवाइड है उन सब चीज़ों के साइड पर खड़े हैं। ये सारी चीज़ें पोस्ट मॉडर्निज़म में ज़ेर ताब आई हुई हैं। पोस्ट मॉडर्निज़म के मुताबिक और structuralism which started all this thing it started by the way with Jacques Derrida's famous lecture at Johns Hopkins University in 1967, structure, sign and play in the discourse of human sciences. और जब वो जिस टाइम डरिडा ये लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, उनके सामने क्लॉड लेवी स्ट्रॉस भी बैठा हुआ था, जो कि बाबाए वो भी से structuralism hai. He was sitting in front of him when Derrida was deconstructing structuralism in front of him. So you are standing on that side that Derrida is deconstructing. That's why you will not understand what you are not allowed by your structure to go over multi and interdisciplinary to understand what Derrida is doing. That's why your understanding of postmodernism is one-dimensional. You are unable to see it being part of postmodernism, post-colonialism, and post-structuralism, and that it is not coming from Heidegger, Nietzsche, Lacan, Freud, and Foucault and Derrida. It is not the genealogy of postmodernism, but it is Heidegger and the Frankfurt School and critical theory and the masters of suspicion and what we say Derrida's lecture. This is the proper genealogy of postmodernism, not what you were saying. Heidegger, Nietzsche, Lacan, Freud, Michel Foucault, and Derrida, and the Yale School. So that is, if we take that view, it will be a one-dimensional view, which will definitely take postmodernism to be working within a vacuum. For example, post-colonialism में हम कौन से राइटर्स हैं जिनको पढ़ते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, और उन राइटर्स के पीछे कौन है? फॉर एग्जांपल होमी बाबा, गिराती चक्रवर्ती स्पिवक और एडवर्ड सईद, इनके पीछे कौन लोग हैं?
इनके पीछे मिशेल फूको हैं, इनके पीछे वो भी से डरीडा हैं, इनके पीछे एक मार्क्स की एक ट्रेडिशन है कि नहीं है? लेकिन आप तो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म अपॉलिटिकल है। किस तरह पॉलिटिकल है? आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आपको सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही क्या? क्या वहाँ पर मार्क्स एक ख़ास वे ऑफ थॉट से नहीं आ रहा? लेकिन आपको ये समझ क्यों आएंगी? क्योंकि बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर एज अ मार्क्सिस्ट, यू आर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर that has been described by our very own Ijaz Ahmad Saab as capitalist modernity. So you are standing with him, with the capitalist, while having this clock of Marxism all over you. So who are you cheating? Who are you trying to deceive? You are deceiving your own self. Because you are a mimic man. As I said, Mikaule's son. No? So it is not working in a vacuum at all. And understanding postmodernism as if it is isolated from all those other intellectual things that are happening around it, that would be a total mistake. There will be a total diversity of any definitions of postmodernism. And you've been very jolly about it as well. आप तो कह रहे थे कि ये मार्क्सिज्म के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमें तो अगर हम डरीडा को पढ़ते हैं, अगर हम मिशेल फूको को पढ़ते हैं, तो हमें तो मार्क्स की एक ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस नज़र आती है। तो मार्क्स के ख़िलाफ़ किस तरह होगी? We need an answer for that, isn't it? Because we are bound to we are justified in asking this question. फिर आप कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म मार्क्सिज्म के ख़िलाफ़ है, तो मिशेल फूको और जैक डरिडा के पीछे कौन है? Who were described as masters of suspicion? I hope you do answer these questions.